Factory. Following are the definitions included in the Factories Act. So as per Factories Act, what is the definition of factory? Section 2 subsection N of the Factories Act 1948 defines factory to mean. फैक्ट्री का डेफिनेशन में जो फैक्ट्री का मतलब है, फैक्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया? सो फैक्ट्री इज एनी प्रीमाइसेस जिसके अंदर आपके 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, और वे आर वर्किंग, काम कर रहे थे, 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, और वे आर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, या आप देख लो पिछले 12 महीने से वहाँ काम कर रहे थे, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन with the aid of power or is ordinarily so carried on. इसका मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पर भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर, जहाँ पे पावर का यूज हो रहा है. तो एनी प्रीमाइसेस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, या ये पिछले 12 महीने से काम हो रहा है, where on 20 or more workers were working or were working on any day of the preceding 12 months, and any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordinarily so carried on. मतलब क्या, आपके premises, total premises may not be a factory, but उस entire premises के कोई एक part में, maybe with the aid of power or without the aid of power, any sort of manufacturing process is being done. जैसे कहीं कहीं पे पावर का यूज होता है और कहीं कहीं पे बिना पावर भी काम होता है, विदाउट द यूज ऑफ पावर. ठीक है. इट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स, अभी फैक्ट्रीज एक्ट में स्पेसिफिकली किसको एक्सक्लूड किया गया, छोड़ा गया है? A mine subject to the operation of the Mines Act 1952, or a mobile unit belonging to the armed forces of the Union, a railway running shed, or a hotel, restaurant, or eating place. These are excluded, specifically excluded from the Factories Act. मतलब एक हो गया Mines Act because they are स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर द माइंस एक्ट 1952. आप कोई मोबाइल यूनिट ले लो जो कि आर्म फोर्सेस का है, कोई यूनियन का है, या आप रेलवे को ले लो, रेलवे रनिंग सेट, और अ होटल, रेस्टोरेंट, और अ ईटिंग प्लेस. मीनिंग ऑफ द वर्ड्स प्रीमाइसेस एंड प्रेजेंस. द वर्ड प्रीमाइसेस, कोई जगह की बात हो रही है, मीन्स ओपन लैंड और लैंड विथ बिल्डिंग और बिल्डिंग अलोन. मतलब प्रीमाइसेस का मतलब कोई ओपन जगह भी हो सकती है, जमीन है, कोई बिल्डिंग है, या सिर्फ बिल्डिंग को भी ले सकते हैं. Therefore, salt works where processes of converting sea water into salt is carried on in the open comes within the premises as defined in the act. मतलब जहाँ नमक बनता है, नमक तो ओपन में ही बनेगा ना, सी से वो समुद्र से लोग सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, राइट. Ardisar H. Bhiwandiwala versus State of Bombay, AIR 1962, SC 29. This is the case. ये केस को रेफर करें. Presence means a space enclosed by wall. देखो, premises मतलब open land हो सकता है, land and building हो सकता है, but when it comes to space, it should be enclosed by wall. मतलब कोई building के अंदर ही होगा, building ही होगा. Any premises to be categorized as a factory, टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल. कोई भी प्रेमाइसेस को, कोई जमीन है, कोई जगह है, कोई बिल्डिंग है, उसको अगर हम लोग फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट, मैंने उसको फैक्ट्री, इन ऑर्डर टू टर्म इट एज अ फैक्ट्री, देयर आर टू कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल. व्हाट इज इट? एक हो गया 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन द प्रेमाइसेस यूजिंग पावर और बी एम्प्लॉयड नॉट यूजिंग पावर. 10 या 10 से ज़्यादा लोग उस प्रेमाइसेस में एम्प्लॉयड है, विच इज यूजिंग पावर और मे नॉट बी यूजिंग पावर. 20 or more workers must be employed not using power. देखो, जब पावर की बात हो रही है, when you are using power, employed premises, you employed in the premises using power or to be employed not using power. ठीक है. Without using power में 20 is the minimum, with using power is 10 is the minimum. ठीक है. Manufacturing process. Now, what is manufacturing process? As we know, Factories Act, if we are referring to Factories Act, that means manufacturing is the most important term we are going to use here. The expression manufacturing process has been defined in section 2K, 2 subsection K, to mean any process. So what is manufacturing process? Making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to use its use,
sale, transport, delivery or disposal, or pumping oil, water, sewage or any other substance, or generating, transforming or transmitting power, or composing types for printing, printing by letterpress, lithography, photogravure or other similar process, or bookbinding, or constructing, reconstructing, refitting, finishing, or breaking up ships or vessels, और प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल्स इन कोल्ड स्टोरेज। ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आ गए। मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर होती है दैट वुड बी टर्म्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। It was held in the state of Bombay versus Ali Sahib Qasim Tamboli 1994 that बीड़ी मेकिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वहां पे बीड़ी मेकिंग जो है दैट आल्सो कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कुछ केसेस को रेफर किया गया है, जैसे नार्डिसर वर्सेस बॉम्बे स्टेट AIR 1962 SC29 सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। द प्रोसेस कैरिड आउट द सॉल्ट वर्क comes within the definition of manufacturing process in section 2 subsection K, in as much as salt can be said to have been manufactured from seawater by process of treatment and adaptation of seawater into salt। मतलब इसको भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया गया आफ्टर दिस केस in Re K V Sarma 1951 LL 29 conversion of raw films into a finished products was held to be a manufacturing process। Similarly in New Taj Mahal Cafe Limited Mangalore versus Inspector of Factories Mangalore 1956 273 the preparation of foodstuffs and other eatable in the kitchen of a restaurant and the use of refrigerator for treating or adapting any articles with a view to its sale were also held to be manufacturing process। मतलब जो फूड मेनली रेस्टोरेंट वेयर नॉट कवर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग या उसको फैक्ट्री एक्ट के अंदर नहीं रखा गया था, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के प्रोसीडिंग्स होने के बाद दे वेर ऑल्सो इंक्लूडेड। जैसे बीड़ी मेकिंग नहीं थी, बीड़ी मेकिंग केम इनटू फैक्ट्रीज एक्ट, फिर सॉल्ट प्रिपरेशन, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, then the use of the kitchen in a restaurant and the use of refrigerator for treating or adapting any article with a view for selling it, just ice cream preparation, so that also comes under the purview of factories act। अभी आ गया वर्कर। Worker as defined by Factories Act section 2 subsection 1 of the Factories Act 1 1948 defines a worker to mean a person employed directly or through any agency including a contractor with or without knowledge of principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process or in any other kind of work incidental to or connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed forces of the union। यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई भी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से वर्कर कौन होगा, जो एम्प्लॉय है, whoever is employed in a factory। अब वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो by the employer or indirectly maybe by a contractor for a remuneration or not, you are a worker। You are manufactured, you are doing any manufacturing, maybe you are as a part of a process, you are part of a process in any part, maybe cleaning machinery, premises, anything, आप किसी भी तरीके से एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, then you are termed as a worker, but it does not include any member of the armed forces of the union। आर्म्ड फोर्सेस में जो काम करते हैं, जो यूनियन द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको हम लोग वर्कर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग देयरफॉर वर्कर इज अ पर्सन। अब तो वर्कर किसको किसको बोलेंगे, हु इज एम्प्लॉयड, who is employed either directly or through any agency, who is employed in any manufacturing process or in clearing any part of the machinery or premises used for a manufacturing process or in any other kinds of work incidental to or connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process। मतलब आप वर्कर उसको ही बोलोगे जो एम्प्लॉयड है डायरेक्टली और डायरेक्टली, जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है और ही इज इन अ क्लियरिंग पार्ट ऑफ मशीनरी, प्रीमाइसेस or any kind of work incidental with the manufacturing, maybe directly you are not associated with manufacturing but incidental आपका वहाँ पे एक रोल है।
जैसे यहाँ पे एक मतलब सिंपल एक केस दिया गया है इन चिंतामन राव versus State of MP. AIR 1958, all 44. The factory entered into contract with independent contractors known as Satyrs. The Satyrs were supplied tobacco by the factories and in some cases BD leaves also. यहाँ पे एक केस के बारे में डिस्कशन हो रहा है जो केस में एक फैक्ट्री एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के संग एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, जैसे फैक्ट्री और कॉन्ट्रैक्टर इनके संग एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया. सो कॉन्ट्रैक्टर्स also known as satyrs. The satyrs were supplied tobacco by the factory. सैटेडर को ये जो कंपनी है वो टोबैको सप्लाई करती थी और कुछ बीड़ी लीव्स भी. The satyrs were neither bound to work in the factory nor were they bound to prepare the BDs themselves, but could get them prepared by others. In fact, they engaged coolies for rolling BDs and made payments to them. They used to collect BDs from these coolies and take them to the factory where the BDs were sorted and checked by the workers of the factory. The factory made payments to the satyrs for work of rolling BDs. The Supreme Court gave the restricted meaning to words directly or through any agency in Section 2, subsection 1 and held that the worker was a person employed by the management and there must be a contract of service and a relationship of master and servant between them. On the facts of the case, the Supreme Court held that the satyrs were independent contractor and they and the coolies engaged by them for rolling BDs were not workers. यहाँ पर नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि फैक्ट्री मेड पेमेंट टू सैटरडे फॉर वर्क ऑफ रोलिंग बीडी. फैक्ट्री क्या करे, फैक्ट्री ने कॉन्ट्रैक्टर रखा है, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही है. कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर से, वर्कर जो घर में जो कूलीज हैं मे बी वो अपने फ्री टाइम में घर पे बैठ के बीड़ी बना रहे हैं और वो सैटरडे को दे रहे जो कॉन्ट्रैक्टर है. अब वो कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्री में लाकर दे रहा था तो फैक्ट्री का काम सिर्फ था पेमेंट को देना, उनको पेमेंट देना, ये कलेक्ट करना, बीड़ी कलेक्ट करना. सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग दिया टू द वर्ड वर्कर दैट डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड हेल्ड दैट. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो मेरी फैक्ट्री में या इनडायरेक्टली. वर्कर वाज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द मैनेजमेंट and there must be a contract of service and a relationship of the master and servant between them. तो जो भी वर्कर है मैं डायरेक्टली आपको बीड़ी बनाने के लिए रख रही हूँ या मैं थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रख रही हूँ, बट यू आर अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर मी. सो वर्कर एंड एम्प्लॉय दे शुड हैव अ रिलेशनशिप विद देम. Worker was a person employed by the management and there must be a contract of service and a relationship of master and servant between them. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इट वाज हेल्ड कि वर्कर को मैं अगर डायरेक्टली रख रही हूँ या थ्रू एनी एजेंसी रख रही हूँ बट वो एम्प्लॉय मेरा ही है, इसी वजह से मेरा एक उसके संग वर्कर और एम्प्लॉयमेंट का एक रिलेशन होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड अ रिलेशनशिप ऑफ अ मास्टर एंड सर्वेंट बिटवीन देम. सो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या आप बता सकते हो अ रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट बिटवीन देम. ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सैटरडर्स वेयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट. पर यहाँ पर क्या, सैटरडर्स तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे and the coolies engaged by them for rolling बीडीज were not workers. तो इसके लिए जो बीडीज जो बना रहे थे ये कूली थे, they were coolies and they were engaged by the satyrs. Satyrs were independent contractor and they have the coolies engaged by them for rolling बीडीज were not worker. तो इसके लिए ये जो बीडी वर्कर्स जो सैटरडर्स ने एम्प्लॉय किए थे उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको वर्कर और फैक्ट्री मालिक और वो जो वर्कर जो बीडी मेकर थे उनको डायरेक्ट एक रिलेशन में नहीं लाया जा सकता बिकॉज दिस सैटरडर इज नॉट एन एम्प्लॉय कंसल्टेंट. ये कोई कंसल्टेंट नहीं, एक एम्प्लॉय एजेंसी नहीं, उनको एक सैटरडर के नाम से दिया गया एंड सैटरडर आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. उनका काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना. सो अगर रिलेशन होगा तो सैटरडर के संग होगा, फैक्ट्री के संग नहीं होगा. ठीक है. सो दिस वाज द केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग दिया फॉर द वर्कर बट इस मीनिंग के अंदर ये वर्कर्स लोग नहीं आए क्योंकि फैक्ट्री ने सैटरडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, सैटरडर उन लोगों से काम करना.
इसी वजह से बीडीज वे आर नॉट कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, और एक केस है यहाँ पर, आप लोग को केस एग्जाम में केस से क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकली भी आपको जब काम करने जाओगे ये सारी चीजें आएगी, कहीं ना कहीं रेफर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बी एम पटेल, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्क ऑफ garbling paper by winnowing, cleaning, washing and drying in line and laid out to dry in a warehouse are the manufacturing process, and therefore the persons employed in this process were workers within the meaning of section 2 subsection 1 subsection I of the act। मतलब 2I के तहत आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो एंटायर काम है पेपर विनोइंग का, क्लीनिंग, वॉशिंग, जो भी चीजें ये सारे इसमें जो भी इन्वॉल्व है, दिस इज ऑल्सो पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो जो लोग भी इसके अंदर आते हैं, सो दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं पे केस हुआ था, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब एक केस अराइज होता है, मे बी ट्रेड यूनियन द्वारा या वर्कर्स कुछ केस करते हैं, उस केस का जो रेफरेंस है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, उस केस को लेकर यहाँ पर दिया जाता है फॉर फर्दर स्टडीज। प्रेसिडेंट्स को हम लोग को स्टडी करना होता है। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, इन बर्ड चंद शर्मा वर्सेस फर्स्ट सिविल जज नागपुर AIR 1961 SC 644, where the respondents prepared BDs at the factory and they were not at liberty to work at their homes। देखो ये पे यहाँ पर एक बर्ड चंद शर्मा एक केस है, उसके द्वारा द रिस्पोंडेंट्स प्रिपेयर्ड बीडीज एट द फैक्ट्री, उन लोग फैक्ट्री में बीडी बनाते थे, बट दे वर नॉट हैड द लिबर्टी टू वर्क एट देयर होम। They worked within certain hours, which were the factory hours. They were, however, not bound to work for the entire period, and they could go whenever they liked. Their attendance were noted in the factory. They could come and go away at any time they liked. However, no workers was allowed to work after midday, even though the factory was closed at 7 p.m., and no workers was allowed to continue work after 7 p.m. There were standing orders in the factory, and according to this orders, a worker who remained absent for 8 days, presumably without leave, could and be removed। ठीक है, the payment was made on piece rate according to the quantum of work done, but the management had the right to reject such BDs as that not come up to the proper standard। One of these facts, the Supreme Court held that the respondents were workers under section 2 subsection I सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। देखो यहाँ पर भी इनको वर्कर ही कहा जाएगा, बट इन वर्कर्स की सैलरी फिक्स नहीं थी, ये घर ले जाके काम नहीं कर सकते थे, इनको ऑफिस में अपने फैक्ट्री में ही काम करना था। फैक्ट्री कुछ आवर्स था, तो इनमें वर्कर लोग की एक सुविधा थी कि दे कैन कम एनी टाइम, दे कैन गो एनी टाइम, बट वो आफ्टर मिड डे दे कैन नॉट कम, वो आफ्टर मतलब लंच आवर्स के बाद जैसे नहीं आ सकते, एंड दे कैन नॉट वर्क आफ्टर 7 p। उनकी जो सैलरी थी दैट वाज नॉट फिक्स्ड, उनको ये दिया गया था एज पर योर पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जितना पीसेस आप बनाओगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ये एक बात हो गई। इसके अलावा ये भी था कि उनको अगर वो 8 डेज कंटिन्यू अगर लीव पे रहते हैं, दे कुड एंड बी रिमूव, वो निकाले जा सकते, बट स्टिल एज पर द सुप्रीम कोर्ट दे वेर ऑल्सो कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, वो भी वर्कर्स थे एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो जब भी वर्कर के कैटेगरी में कोई आ जाते हैं तो उनको फिर फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से जो भी फैसिलिटीज है वो भी देनी पड़ती है। इसी वजह से हम लोग वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सारी चीज़ों का डेफिनेशन अलग अलग करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग ऑक्यूपायर। हमने फैक्ट्री को पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस को पढ़ा, तो उसके बाद हमने वर्कर के डेफिनेशन को पढ़ा। अब हमारे ऑक्यूपायर। Section 2 subsection N of the Act defines occupier of a factory to mean जो occupy कर, the person who has ultimate control over the affairs of the factory, provided that in the case of a farm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier। देखो, एक कोई फार्म है या कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एनीवन, कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर जो वहां पर उसको ऑक्यूपाई किया गया है, जिसके ऊपर जिसका पूरा कंट्रोल है उस प्रीमाइसेस के ऊपर। इन द केस ऑफ अ कंपनी, जैसे आपका कोई खेती बाड़ी है, कोई फार्म हाउस है, उस पर आपका पूरी तरह से एक राइट है, कंट्रोल है,
you are the occupier. कोई company है, you are the director or you are deemed to be the occupier. In the case of a factory owned or controlled by the central government or any state government or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of the factory by the central government, the state government or the local authority, as the case may be, shall deem to be the occupier. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री होगी तो जो भी उसके अल्टीमेट अथॉरिटी है जिसको मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ही वुड बी डीम टू बी द ऑक्यूपायर. Provided further that in the case of a ship which is being repaired or on which the maintenance work is being carried out in a dry dock which is available for hire. देखो कभी कभी कोई शिप होता है, जैसे तुम्हारी शिप है मेरे पास पड़ी हुई है कोई मेंटेनेंस के लिए इन अ ड्राई डॉक विच इज अवेलेबल फॉर हायर. वो अवेलेबल भी है फॉर हायर, मतलब किसी को भाड़े पे भी जा सकती है. The owner of the dock shall be deemed to the occupier for the purpose of any matter provided. जो ओनर है डॉक का, जैसे मेरा डॉक है, मेरी जगह पर आपकी शिप आई हुई है, रखी हुई है डॉक में, शिप को रखा है हमने रिपेयर करने के लिए. सो मैं आई वुड बी टर्म्ड एज द ऑक्यूपायर टिल, अब किस किस सेक्शन में आती हूँ, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 7B, सेक्शन 11 और सेक्शन 12. Section 17 in so far as it relates to the providing and maintenance of sufficient suitable lighting in or around the dock. Section 18, 19, Section 42, Section 46, Section 47 or Section 49 in relation to the workers employed on such repairs or maintenance. ये सारे sections हम लोग details में आगे पढ़ने वाले हैं. What does it refers to? The owner of the ship or his agent or masters or other officers in charge of the ship or any other persons who contracts with such owner, agent or master or other officer in charge to carry out the repair or maintenance work shall be deemed to be the occupier for the purpose of any matter provided for by any other section, by any under section 13, section 14, 16 और 17. ये सारे sections के हिसाब से कोई ओनर है शिप का या कोई मास्टर एजेंट है या उसका मास्टर है, ऑफिसर इंचार्ज है, मतलब ये सारे को ऑक्यूपायर बोला जाएगा. The machinery, plant or premises in use for the purpose of carrying out such repair or maintenance work by such owner, agent, master or other officer in charge of person. General duties of the occupier are, duties क्या है occupier. Section 7A has been inserted by the Factories Amendment Act and the new section lays down the general duties of an occupier as follows. Plants maintenance that is safe and without risk to health of the workers. अगर मैं occupier हूँ, मेरी responsibility है कि मैं उस plant को properly maintain करूँ so that कोई भी risk ना हो for the health of the workers. Safeguard health and safety with the use, handling, storage and transport articles and sustenance. सिंपल सी बात है, मेरा देखो जब मैं एक प्लांट का ऑक्यूपायर हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी किसी भी आप मैनेजर को भी रखते हो, ही इज द ऑक्यूपायर, उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इट इज हिज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने वर्कर्स की हेल्थ का ध्यान रखे, सेफगार्ड करे कि भाई जो भी मटेरियल्स यूज हो रहा है दैट इज यूज्ड इन अ सेफ वे, हैंडलिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स हो, एनीथिंग. मतलब ऑक्यूपायर की जो जनरल ड्यूटीज एज पर फैक्ट्रीज है, इट हैज बीन एनहांस्ड कि इतनी ज़्यादा एनलार्ज कर दी गई है ना ड्यूटीज, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. मॉनिटरिंग ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, इट ऑल्सो लेज डाउन अ ड्यूटी ऑन द ऑक्यूपायर टू प्रिपेयर 9 written statement of policy with respect to the health and safety of the workers and to give notice to the workers as per rules. मतलब आप वो पॉलिसीज भी लिखोगे, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन भी करोगे और वर्कर के हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एंटायर प्रेमाइसेस. जब हम लोग ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एंटायर प्रेमाइसेस की बात करें, इट मीन्स ओवरऑल मतलब आपके वर्कर से लेकर एंटायर प्रेमाइसेस की एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की हो गई. General duties and duties of manufacturers, etc., as regards articles and substance for use in factories. For the purpose of this section 7B, articles includes plant and machinery. It lays down general duties of designers, manufacturers, importers, suppliers. As regard the articles and substance used in the factory, it would be the duty of the designers to ensure that the articles design would be safe and without risk to the health of the workers. तो आप देखो ये कुछ भी आर्टिकल अगर डिज़ाइन होती है फैक्ट्री में,
It should take into concern the health of the workers. ठीक है. Importers of articles also will have to ensure that articles imported conform to the standard set out in the country or of the standard adopted outside the country. मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट करते वक्त भी देखना है कि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सारी चीज. अब देयर आर अदर डेफिनेशंस क्या है? Adult means a person who has completed his 18th year of age. Section 2, subsection A. मतलब adult का मतलब क्या हो गया? Any person who has completed the age of 18. Adolescence means a person who has completed his 15th year of age but has not completed his 18th year of age. 15 से ज़्यादा, 18 से कम. ठीक है? Calendar year means the period of 12 months beginning from first day of January in the year. Section 2 subsection B. ठीक है? Child means a person who has not completed his age of 15 years of age. Young person means a person who is either a child or an adolescent. Young person कौन है? या एक child है who is either a child or an adolescent. Day means a period of 20 hours, 24 hours beginning at midnight. 12 बजे से. Week means a period of 7 days beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by Chief Inspector of Factories as per Section 2 subsection A. मतलब नॉर्मली सैटरडे नाइट के मिडनाइट से लिया जाता है, बट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज उस एरिया का जो है वो जिसको डिफाइन कर देगा किसी भी दिन को, संडे मंडे कुछ भी. जैसे कहीं कहीं पे थर्सडे का होता है, थर्सडे छुट्टी होती है सारी फैक्ट्रीज में. Power means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency as per section 2 subsection G. Prime mover means any engine, motor or other appliances which generates or otherwise provides power. Section 2 subsection H. यहाँ पे प्राइम मूवर का एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्यों दिया? प्राइम मूवर आपकी फैक्ट्री का जो मेन मूवर है, जिससे मेन आपका काम चलता है. Transmission machinery means any shaft, drum, pulley, systems of pulleys, coupling, clutch, driving belts or other appliances or devices by which the motion of a prime mover is transmitted to or received by machinery or appliances. Machinery includes prime movers, transmissions, machinery and all appliances whereby power is generated, transformed, transmitted or applied. Managing agent has the meaning assigned to it in the Companies Act 1913, Section 7 of the 1913, Section 2O. Prescribe mean, देखिए आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यू माइट हैव टू रिमेंबर दिस आर्टिकल्स एंड सेक्शंस, बट जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं उनको तो इसका एक शॉर्टकट मैं बता दूंगी, अकॉर्डिंगली यू कैन रिमेंबर दिस, कैसे किसको याद रखना है. ठीक है? Because when you are referring to law मतलब ये you have to remember the sections and articles every time. Prescribed means prescribed by rules made by the state government under this act. Relay and sift means relay and sift का मतलब where work of same kind is carried out by two or more sets of work. So the sift जो होता है. अब हम लोग इसके बाद, ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशंस वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली एक फैक्ट्रीज एक्ट की रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से जाना है, काम किस तरीके से शुरू होता है, कि कौन से क्लॉज किस टाइप में यूज होंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे.